Hello everyone. In this module, we are going to learn about OpenStack Private Cloud. We are going to see that what is OpenStack, what are the fundamental building blocks of OpenStack, what are the major components, and their functionalities and responsibilities. So let's start. What is OpenStack? OpenStack is basically a cloud computing platform, which is primarily being used for the private cloud. But there are a lot of companies which are public cloud companies, which are actually using OpenStack to provide public cloud services as well. And so OpenStack also say that it's a cloud operating system. So what it primarily does is it provides you a large pool of computing, storage, and networking resources. And you have to have it inside a data center. The data center can be a very small data center. It can be a very large data center. It depends upon your requirements. The good thing about OpenStack is you can also use it on commodity hardware as well. Like you can use your traditional computers, small end workstations, to make a small OpenStack based cloud platform. It's an open source and freely available software. You can download it, and there are various ways to get it to install. You can see a lot of guidelines, and they're having different methods through which you can install it. A typical installation generally requires to have at least three computers, but they are having a mechanism through which you can install it on a single computer to have a brief showcase about it. So we deploy OpenStack as a infrastructure as a service और जैसे मैंने कहा दोनों में यूज होता है पब्लिक क्लाउड्स में भी प्राइवेट क्लाउड में भी you can download it and you can convert your existing infrastructure from a traditional infrastructure to a private cloud based as well. And they do have a three-tier pyramid design in OpenStack data center, where at the top you start with the interface and then you go down and down, we will see later. History OpenStack की कुछ इस तरह है कि it was started back in 2010 where the Red Space Hosting जो कि एक बड़ी hosting company थी in the United States, they joined their hands together with the NASA और NASA का एक already clusters के लिए they do have a platform which they say Nebula platform or Open Nebula platform. So they joined together, or in those they got two components. So the first version of the OpenStack has two components, and later on you will see with the current versions there are a lot of components, more than 40 plus components are there, and gradually these increase their capabilities as well. So there were two things. The first one was Swift from Rackspace, जो कि basically एक object storage service है, और Nova was actually a compute platform. A computer आपको पता है through which we do the computation, and that was from the NASA. और यहाँ से इन्होंने इसको start किया. The first release was Austin, or which immediately was released within 4 months, and then they plan to release regular updates to the software, and this is what they have been doing since that day. Generally, OpenStack की जो है, after every 6 months they come up with a new release in which they do the bug fixing, new feature improvements, new components, and they do a lot of stuff. और जैसे कि ये है भी ओपन सोर्स और ओपन कोड और फ्रीवेयर है, सो इसको कम्युनिटी में बेसिकली थ्रू कम्युनिटी मेजर कंट्रीब्यूशंस आती है. So this is a timeline for the history. 2010 में जैसे मैंने बताया कि this NASA and the Rackspace they started together, but later on in 2012 they formed an OpenStack Foundation, and through OpenStack Foundation then they got a lot of other partners as well who started contributing into that, starting sponsoring. In 2014 they come up with the OpenStack marketplace as well. Marketplace से ये हो गया कि they got a big ecosystem as well. पहले तो ये था कि फाउंडेशन बनाई तो there have been a lot of contributors, but once they got a marketplace तो अब OpenStack enabled flavors आने लगे. For example, Linux flavors in which are for the OpenStack, and there are many other applications, other servers available as well for the OpenStack as well. So through the marketplace.
अच्छा ये वो टाइम था at that time initially because I was working with the eucalyptus as well. Eucalyptus got very famous in 2010, 11, 12. Eucalyptus was also a similar type of cloud platform, primarily used for the private clouds, and they got a lot of popularity because of having some compatibility with the Amazon machine instances. Chunki Amazon in 2010, 11 was the most famous one for the public cloud. So वो public cloud along with Eucalyptus based private cloud, you can have a very good combination. But the OpenStack actually really created disruptive measures and to almost kick out the Eucalyptus. So उसकी एक बड़ी मेजर रीजन यही थी कि they come up with the more open standard, they adopted open standards, they created a lot of conformance with the existing industry stuff, tools, and other things. So because of that, they got a big marketplace. You can go to the OpenStack website and you can go to the marketplace. You can download their available distros and softwares. So इन्होंने वो एक ecosystem बहुत जबरदस्त बना दिया. And then they started with their certifications, and by 2010 they said like Fortune 100 companies, half of them they started running OpenStack as well. और फिर उन्हें मजीद अपने certification launch की. Then in 2010, sorry, 16, China also got a lot of OpenStack based deployment, primarily in their telecom sectors. And uh, इसके बाद 2017 में OpenStack ने अपनी डाइवर्सिटी को ज्यादा बढ़ाया. In the beginning, OpenStack was primarily used with the virtual machines only. Then they started giving the support for the bare metals as well, and eventually they started giving support for containers as well. क्योंकि इन तीनों तरीकों से you can do the computation. You can have a bare metal, कि आप सिर्फ metal, typical जो hardware based servers हैं वो कर सकते हैं. You can have VM based servers, and then you can have container based servers as well. OpenStack, I already told you it's a cloud infrastructure or a cloud operating system. So you actually access this whole bunch of a huge software stack through some APIs. So on APIs के through आप access करते हैं, and it primarily gives you infrastructure as a service type of services in which you can have virtual machines, you can have containers, or you can have bare metal as well. So you can have any type of computational services available in the OpenStack, which is a great strength to the OpenStack. And OpenStack can be deployed in any form. You can use it in a private, public cloud, obviously in a private cloud. Primarily, it's for the private cloud, and then you can have it in form in a hybrid cloud where you are using in your private cloud and in a public cloud, which is based on OpenStack as well. And there are a lot of public cloud providers which are actually using OpenStack at the backend to provide you services as a public cloud provider. For example, Rackspace, which is the pioneer or the founding member of Rackspace Foundation, then Cisco, Ubuntu, Aptera, Huawei, SUSE, Redex, and OVH. So there are a lot of companies, and there would be definitely many other as well. OpenStack is open stack actually. It's the whole stack is quite open. It's an open source, and major principles are what? It's open source. So by having open source, it gives you a lot of choice in uh, 1 minute. Okay, so it's open source, so it gives you a lot of choice control. So you can choose between different vendors. You're not going to end up with a vendor lock-in where you are actually locked in one specific vendor. It gives you open design, open development, open community, so you can have an ability to contribute or directly influence the roadmap. Any one of you can contribute to the OpenStack as well. You have to just be a member of the OpenStack community as an individual member. I myself is a member as well, although I do not generally contribute to them क्योंकि ये एक बड़ा specific वो है कि अगर आप उसकी development के अंदर contribute करना चाहिए, you need to be really involved into that. And then it's quite widely adopted open APIs और नए जितने भी आपके standards आ रहे हैं उनसे it's quite compliant as well. और जो community it's very large, quite vibrant community. Different types of people are there from development, from operations, and they do the development and they share their knowledge. There are a lot of summits, conferences organized through OpenStack platform. तो काफी सारी ऐसी activities हो रही होती हैं. So it's a very large ecosystem for OpenStack. Primarily business drivers जो हैं for OpenStack के the top one is
it lets its customer to avoid the vendor locking, so that the customer, they should not be bound to one specific vendor, though it's their topmost business driver, but actually eventually इस पे भी तनकीद होती है. You can end up having a lock-in with the OpenStack as well. Even though it's because it's private, so वो कहते हैं जी अच्छी जी public cloud के लिए हम आपको किसी के साथ specific vendor के साथ lock-in नहीं करेंगे. We do have a conformity with variety of vendors, so don't worry about that. But actually, for a private cloud, you can have a vendor lock-in as well. Then accelerate innovation, yes, because they are using quite open standard, so you can come up with new ideas. You can primarily focus on your core business functionalities, through which you can do more innovation. And then operational efficiency is good. Generally, the OPEX expenditures are very low in OpenStack based deployments. You can, like I said, you can even use your traditional infrastructure, or even general infrastructure as well. Okay. Which industries choose OpenStack? It's been used by all around, be it the retail sector, or e-commerce, financial sector, telco, academia, research, energy and manufacturing, insurance, entertainment, or other sectors as well. So it's been widely been adopted in a variety of sectors. कोई भी आप sector देख लें, उसमें ये use हो रहा है. And what you can run on OpenStack, because it's been used widely in a variety of sectors. So the similar is for what sort of things you can run on OpenStack. You can run telecom based applications. You can do the network function virtualizations. You can run high performance computing. Sun is running one of the biggest high performance computing platforms. So you can, so they are using it. So it's quite good for HPC. Generally, the public clouds are not considered to be very much good for the HPC, but the private cloud you can have. So OpenStack is quite good for that. You can run your enterprise applications. You can run big data. You can have a multi-cloud, hybrid cloud based implementations, and run e-commerce developer productivity suites, where the developers are doing the development, debugging, testing, every type of thing onto that, and you can run variety of servers or web services onto that. तो हर तरह का आप काम इस पे actually कर सकते हैं. Uh, what are the motivation for the worldwide adoption? Like I said before, it's been widely been adopted all around the world. It provides you infrastructure as a service, and there have been more than 200 companies which has joined this project of OpenStack. It's been open, so source is open, design is open, development is open, community is open, and the code is freely available with the Apache 2 license. And I said you before that it gives you very low OPEX expenditure. The operational expenditures are very low generally. It's quite simple to implement, manage, massively scalable and feature rich as well. और आप इसको किसी भी किस्म की implementation में use कर सकते हैं. Or it's quite cost effective for all type of consumer. Again, it depends upon the type of implementation that you are doing with it. Why OpenStack? ये पहले भी बात हुई कि ये तकरीबन control and flexibility is quite high. It's compatible with many existing public clouds, so you can easily connect it. You can scale up it very quickly. If your existing private cloud infrastructure has been limited, you reach the limit, you can scale up to the public cloud very easily. आप किसी भी public cloud के ऊपर चीजों को in or out easily कर सकते हैं, move कर सकते हैं, because interoperability and portability is always a big challenge in a inter-cloud or a multi-cloud environment. Then there are a lot of built-in storage management tools out there. Low cost per megabyte of storage is there. So there are many other reasons as well. If you compare it with other IaaS platform, so there are a few characteristics being given here on which it's been compared, but it's not a very, very good comparison, because other does not fit each and every type of IaaS platform into one category. So this is not something too much true or exactly true. But anyhow, in general, if you compare it particularly with the other IaaS platforms, so it generally goes more with the public cloud. For example, software and the licenses,
In open source, it's sorry, in OpenStack, it's open source, whereas in the other, it's generally closed source, but it does not necessarily mean it's definitely closed source. You may have an open source as well. And Initial Origin are the leaders. They are Rackspace and NASA in 2010. For other platforms, again, it depends. It could be one vendor, it can be multiple vendor, it can be a consortium or a community as well, just like Rackspace. So again, not much. Good. Current origin is actually OpenStack Foundation. Every other has their own vendors. Initial development stages is open source. Others, they are closed source. Again, not necessarily mean some of the providers, they start with the open source, they eventually become closed source or start with a closed source and become open source as well. Then deployment expertise required. You need to have a bit advanced expertise required. Again, not necessarily depend. It has become a bit easier. In other IS deployments, it's medium. Then feature sets. There are extensive feature sets. Other IIS platform, yes, private IIS platform, they give you limited. But if you talk about the public, no way. Most of the public, famous public platform, they give you much more feature sets as compared to OpenStack. Like if you compare it with the Google or Azure or AWS, so they give you a lot of feature, so they are much more extensive than OpenStack. But if you talk about the other yes private IIS platforms, they give you limited feature sets. Installation options, it's configurable. And for the other IIS platform, again, it depends. Public, they are generally rigid, yes. OpenStack is generally easier because we have long ago in 2014 we deployed OpenStack and it was hell of a work. It was very tough. And then development cycle is short. Yes, it's quite good for OpenStack. They, like I said, they even come up with a release every 6 months, so which is quite good. And for the others, generally it's a bit long. Vendor support is quite extensive for OpenStack. Again, in comparison to other private cloud providers, चूंकि अब इसका ecosystem भी बड़ा हो चुका है and they have a large community backed by a very big enterprise level system. So they give you a very good support as well. Language, it's been developed in Python, and others they use their own languages. Uh, Enterprise development status, still and immature. Again, it depends. क्योंकि यहाँ पे अगर हम बाकी cloud private clouds की बात करेंगे, yes, again it varies. कुछ का तो मेच्योर है, लाइक जो इनका पहले से वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म बेस थे, जैसे VMware था, तो वी क्लाउड इज क्वाइट मेच्योर. लेकिन अगर हम बात करें यूक्लिप्टस की, क्लाउड स्टैक की, तो उनका इतना मेच्योर नहीं है. सो उनसे प्रोबेबली आपका ओपन स्टैक का ज्यादा मेच्योर है. सो ये कोई बहुत ज्यादा एग्जैक्ट वो नहीं है, कंपैरिजन नहीं है. यू कैन do these comparisons among multiple exact clouds, not in general. Market trends, I was trying to find out the current trend, मुझे exact कोई मिला नहीं, but it's a little old. So इसमें ये था कि yes, OpenStack was increasing at a very fast pace. So it started somewhere here, and you can see its graph. And Cloud Stack from Apache, it started on the similar time. But शुरू में फेमस होने शुरू हुआ था, but now अभी तो बहुत कम. और VMware क्लाउड काफी ज्यादा भी यूज हो रहा है. और Amazon AWS obviously yes, it's a public cloud, तो उसकी यूजेज है. लेकिन अब उसके साथ साथ now we do have Google and Azure, big cloud providers. OpenStack has been coded in Python. Python के अपने काफी सारे एडवांटेजेस हैं. इस वक्त तो वैसे ही आपको पता है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है Python. हालांकि पुरानी लैंग्वेज है, काफी अच्छे से यूज होती है, बट नाउ because of interoperability and ease of use, ease of coding is there in Python, so it has become quite popular. और फिर उसके अलावा आपको पता है कि इस वक्त मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चीजें बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं. It's quite good for that. So Python is a very intuitive language if you compare it to C or C++. And it has generally ये जो इस तरह के प्लेटफॉर्म है, generally they are being developed in C, C++, and Java. They have been.
ज्यादातर इन्हीं में है, सबसे ज्यादा सी सी प्लस प्लस में, तो जावा में, लेकिन दिस इज बीन डेवलप्ड इन पाइथन. Why Python? So Python has very rich technical features. So C C plus plus भी देती है, तो but लेकिन Python भी दे रही है. But the good thing about Python is it's really fast to write features because the coding is quite simpler as compared to C C plus plus. And the development cycle is very fast, obviously, because of those reasons. And then it has good integration with several databases and RESTful APIs. So इसलिए Python is a good option. Then, as I told you, there is OpenStack Foundation, and who is responsible for doing all the stuff around the OpenStack. So they are maintaining the infrastructure for development and communication, and they coordinate all the software releases. Whatever codes come into there, they inspect it, they merge it, they uh, eventually do the releases as well. They do the trademark, they manage the legal issues as well. Then they are responsible to host the conferences, summits, developers meetings, and then they promote the use of open source infrastructure project as well, which is OpenStack. So you can visit this foundation on openstack.org/foundation. फाउंडेशन में मल्टीपल टाइप की स्पॉन्सरशिप है. एक प्लैटिनियम मेंबर्स होते हैं, देन दे यू कैन हैव गोल्ड मेंबर्स. सो प्लैटिनियम मेंबर्स की जो ईयरली जो स्पॉन्सरशिप अमाउंट है, दैट इज मोर. They contribute more and they do more decision making, more actively involved in the decision making related to OpenStack. And then there are gold members as well. So it's a long list. Some of them are being given here. OpenStack community जो है, it consists of quite large number of members. और again मुझे current figure exactly मिली है, थोड़ी सी पुरानी है, 3 साल मेरा हाल है. Or at that time, there were more than 85,000 plus members. Was there in 187 countries, and 675 plus organizations were contributing in the OpenStack community, and 2,400 plus code contributors, and 2.5 million plus lines of code, and 400,000 plus lines of comments. Okay, they were there. So it's a quite large software. So 2.5 million plus lines of code. So quite large software. And this is one of the largest open source communities in the world. And the community structure is like they have been divided into projects. And now there are 40 plus. It's still 20. It's 40 plus projects now. And each project has one team leader. And so they maintain milestone plans and everything. And they are generally being employees of OpenStack. Then there are code developers, which approves code for merging. So all type of code, it goes first to the code developers, who are being managed by the team leaders, and then there are actual developers who are called contributors. So anyone, because it's an open source, so anyone can submit his code. So they submit their snippets or the blueprints, and then eventually they are being reviewed and being included in the OpenStack. So the OpenStack community is quite large. So there are a lot of companies there and individuals there as well. So the companies, they are generally paid members, so they have to pay some sort of contribution every year, depending upon their choice. And then individuals are generally free. And how the community collaborate? So there are various mechanisms to which the community members they collaborate. One of them is their OpenStack generally organizes many summits all around the year. Then they do hold their general meetings, and they do have office bearers as well, on which they do have a lot of voting. And then they organize hackathons as well. They do have a lot of mailing lists as well, through which they can collaborate and communicate. Then they do have collaboration sessions as well, in which they can have a coding developers conferences. And then they do have meetups and
the days as well, OpenStack days and like this. So they do organize. OpenStack also collaborate with other communities as well, and for example, there are other many open source softwares or other communities as well. So they do collaborate with them. Like for containers, they have a collaboration with Kubernetes, with Docker, with Mesos. For paas, they have a collaboration with Cloud Foundry, OpenShift, and it would be having with more than that. It's not an exhaustive list. It's just an illustration with a few names. And then for network function virtualization with OPNFV, and then Cloudify, and for preventing they have with the Terraform, Puppet, SaltStack, and Ansible. So I told you they do the releases very quickly, generally after every 6 months, and they come up with these releases. वो भी आपको आगे मैं बताऊंगा different releases जो हैं उनके अंदर क्या क्या उनके modules हैं. If you look at the OpenStack, OpenStack actually gives you infrastructure as a service, which is being accessed through an OpenStack-based dashboard, and this dashboard uh, allows you to have an access to the underlying resources, your infrastructure resources. So you do have a compute resources, you have obviously networking, and then you have storage resources. Storage be multiple type key, and compute maybe, as I told you, you can have three types of. You can have VM based, you can have bare metal, and you can have access to the containers. So any user admin connects your API through the some web-based portal, and so the API gets it connected to the resources जो कि आपके नीचे available होती हैं. So OpenStack works as a cloud operating system. So it gives you or provide you a platform जिसके through आप इन resources को access करते हैं. तो इसको हम डिटेल में देखते हैं. OpenStack के अंदर जैसे मैंने पहले कहा, there are a lot of projects. प्रोजेक्ट्स की लिस्ट काफी बड़ी है, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है. और लाइक देयर इज नोवा व्हिच इज कंप्यूट. उसका प्रोजेक्ट का यह हर जो मॉड्यूल है उसका उन्होंने नाम रखा हुआ है. There is Neutron, which is for networking. Swift is for object storage. Then Cinder, Keystone, Glance, they are there. So OpenStack मॉड्यूल जो है इस वक्त दे आर अराउंड 44 मॉड्यूल्स. ये थोड़ी सी पुरानी फिगर है, और इसमें जो मॉड्यूल्स हैं दे आर द मोर कोर मॉड्यूल्स, ज्यादा इंपॉर्टेंट या मेन मॉड्यूल्स हैं. You do we do have Nova, we have Keystone, Cinder, Horizon, Heat, Glance, Neutron, Ceilometer, through Sahara. और ये मॉड्यूल शुरू के जो थे, this is the second release Baxter. First one was Austin. In Austin there were only two. In Baxter there were three modules. A new module Glance was introduced. Then Cactus was there. Then in Essex they were introduced two more modules. Then they start increasing modules, and now they are about 44 modules. So this is the list of modules. So the first one, Austin, was released in 2010, and it was having only Nova and Swift. Nova is a compute, and Swift is a object storage module. Then Baxter was introduced. They also introduced Glance as well. Glance is an imaging service. जिसमें हम image storage करते हैं. Then there is Cactus, Daplo, etc. फिर ये बढ़ते गए. Then we got ये जो है यहाँ तक जो है it became really quite comprehensive. और यहाँ by this Havana, OpenStack started giving you a lot of services. और इसमें Nova was there, which is compute, Glance image service. You got Swift, which is object storage. Horizon is an API of आपका जो access है to the it's the dashboard to the whole cloud platform. Then Keystone is an authentication mechanism. It's Neutron for networking, Cinder for block storage or volume storage, then Heat for orchestration, and Ceilometer. ये मेजर कोर मॉड्यूल्स हैं इसके जो कि मौजूद हैं, और ये जो हैं इनको हम फिर आज के इसमें देखेंगे भी थोड़ी सी डिटेल. So they keep on increasing these modules. Octopi, Queens, Rocky, Stain, Train, Surrey, and Victoria is going to be released in
October 2020. Right now, we are using Azure, जो इस वक्त available है. If you go there, or you can have an access to the Azure. So Azure has about 44 services which are there. So different services, they are providing different types of functionalities. तो ये इसकी functionalities इस तरीके से हैं कि आपका जो नोवा है, it's a compute service. कंप्यूटर आपको पता है कि you actually run computation onto or through this, और जो नोवा है generally it gives you primarily जो start हुआ था it's from the VM based computation services. Then there was Swift as well जो कि object storage देता है, object based storage है. Then there is glance जो कि imaging services हैं. जो भी आपने compute करना है it's going to be stored in form of an image. तो उसकी जो image के जितना भी metadata उसकी information है, glance contains that. Object के अंदर उसको store किया जाता है. Then in the later releases they came up with the horizon which gives you a dashboard. So in the early days it was only accessible through the APIs. Command line APIs के through आप इसको access करते थे, but with the horizon it made the job very easy. आपके पास web based dashboard आ जाता है and you can interact with all your cloud platform through this dashboard. Keystone is the identity service which lets you log in into the system and eventually get an access to the different services or resources. तो इसके through आप access करते हैं इन services को. Then there is Cinder, which is block storage. So you do have object storage and you do have a block or volume storage as well. Then Neutron is there, which gives you networking services. Then there is Heat, which is orchestration engine. So through orchestration engine, you can run multiple instances. You can scale up, scale down automatically. You can write the scripts. Then there is Ceilometer, which only say whenever you are using a cloud platform, it needs to be metered. So this is a metering service. So whether you bill it or not, but you need to have a metering of cloud. So this gives you metering services. Then there is trove, and trove gives you database services, but these are additional. So these are the core services. ये जो ये 8-9 services है ना, ये इसकी major core services है. Then there is Mistral, which is workflow. There is Sahara, which is elastic map reduce. Ironic is for bare metal based services. Zacher is a messaging platform, which is based on AMPQ, जो आपका advanced message queuing protocol होता है. Then there is Manila, which is shared file system. Designate is for domain name services. Searchlight gives you searching services. Barbican gives you key manager if you want to have a key management services, so it gives you that. Then there is Magnum, which is container orchestration. Vitraj is root cause analysis, and now this rule-based alarm action-based system. So they are widely being used. But the major or the core modules are given before these one. These are the core modules. So ये वही modules आपको दिए हुए. If you talk about the OpenStack architecture, it follows a modular approach, and different projects हैं जैसे अभी आपको बताया, they have distinct roles and responsibilities, and eventually these projects are further being classified into sub projects. तो वो जो different sub projects हैं उनके अंदर काम किया जाता है, and eventually उन्हें merge करके projects में लाया जाता है, and these projects they do the communication with each other as well. So in a very simplified architecture, you access the OpenStack through the dashboard, and through this dashboard, you have an access to OpenStack-based services. You connect it, whatever service you are going to use, it's going to be done through the dashboard. Yeah, वो dashboard के through उसको access करते हैं. So, for example, network has, so dashboard provides an UI for network. For block storage, it provides for object storage, for images, for compute, and then eventually for identification or authentication, it provides authentication through that. तो ये जब भी आप कोई भी resource access करते हैं, जो key manager है आपका, जो Keystone है, that it is widely been used. ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि हर एक के लिए ये साथ-साथ authentication देता है.
तो सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक बार अगर ओपन स्टैक में लॉगिन हो गए तो अब आप उसको यूज फौरन से करते जाएंगे, हर चीज के लिए की स्टोन बार बार यूज होता है। सो वंस यू गेट लॉग्ड इन टू द सिस्टम, तो उसमें एक जो पहला स्टेप होता है वो तो ये होता है कि आपकी जो जो बी ऑथेंटिकेशन के लिए क्रेडेंशियल्स हैं, लेट्स से योर यूजर नेम एंड पासवर्ड इज देयर, इट्स बीन रिप्लेस्ड विद अ टोकन। जो टोकन है, एक यूनिक टोकन जनरेट किया जाता है, और वो जो टोकन है वो इंटरनली यूज किया जाता है, और वो टोकन कंटेन करता है ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें ये भी होता है कि कौन कौन सी रिसोर्सेज आप इसमें यूज कर सकते हैं। हर रिसोर्स की क्योंकि आपको एक्सेस परमिशन नहीं होती। Okay, so this is quite an abstract architecture, and so here is the conceptual architecture. आपके जो core components हैं, they are inside जो काम कर रहे हैं, और जो मेजर उसके ऊपर जो इस सारे के साथ मुसलसल डील करते हैं, they are horizon through which actually you interact with the services or with the resources. Then there is uh, pointer. So then there is Ceilometer, which is actually monitoring the usage of each and every service. And then there is authentication, which is giving you access to all type of resources. So all of you know that there are generally two types of basic services. One is authentication and the other one is authorization. So the first step is you get authenticated with the help of Keystone. And so it lets you inside the system. And once you are inside the system, access to any resource has been authorized. क्योंकि जरूरी नहीं होता कि आप हर चीज के लिए ऑथोराइज हो, और अगर हैं भी किसी चीज के लिए तो इन विच वे यू आर ऑथोराइज, योर एक्सेस राइट्स और द थिंग्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर यूजर्स। तो ये तीनों जो हैं ये इन सब के साथ काम करती हैं। Then you do have other services. So you have Glance, which stores the images, which has the images, and then you have Nova, you have Swift. Swift जो है वो basically उन images को eventually store करता है. Then you have Cinder, which is a block storage. You can run your VMs as well. You can have a Neutron. Neutron जो है वो आपके network access provide करता है. Primarily, let's say you run a VM, so it's going to assign a network access to that VM. अब वो चाहे VM based हो या चाहे bare metal हो. Bare metal का नाम इसमें ironic है. So for ironic, it gives you a PXE based access, क्योंकि आपको पता है कि वो फिर remotely hardware based जो remote boot आप करते हैं with the help of PXE, it provides you that as well. And then there is Trove as well, which is a provisioning manager. Yeah, you can have a heat जो है वो it gives you orchestration, so it can orchestrate variety of types of services. So ये इसका एक conceptual architecture. And then if we talk about the logical architecture, in the logical architecture you have a more close access through the internet. You get an access to this thing. So every type of service has some specific APIs which acts on behalf of that service. So इसमें जैसे है you do have a Swift proxy. So this is Swift, which is object storage service. So you have a Swift proxy, you have Swift account, container, object. You do have your Glass. So you have an API access to Glass API, then Glass registry. So actually आप कर क्या रहे होते हैं, आप इन APIs को access कर रहे होते हैं. You can have a scripted as well, but OpenStack के अंदर ये internally सारा built in है. वो वहां पे आप जिस चीज पे क्लिक करें, because generally you access it through the horizon. So if you are accessing it through the horizon, so you are going to have access in a way जिसमें आपका ये ऑटोमेटिकली खुद से कम्युनिकेट करती है. इसी तरह अगर आप नोवा जो कि कंप्यूटर है उसके साथ करेंगे, which is a little bit more complex, so नोवा API के थ्रू आप इसको एक्सेस करते हैं. Then there are different APIs or the components as well जिनके थ्रू आपस में कम्युनिकेट करके आपको काम करते हैं. So whenever a user accesses this thing, user ने सिर्फ और सिर्फ इसको horizon के through access करना होता है. तो horizon जो it provides a web based interface. तो ये internally उसकी implementation इस तरीके से हुई है जिसमें वो APIs को यूं call करते जाते हैं. ठीक है, तो आपने generally इसको नहीं करना होता. But if you want to have a low level access, or you are or a contributor to the OpenStack, then you need to have an understanding of all these components.
modules. ठीक है कि ये सारी जो APIs हैं ये क्या क्या करती हैं, how they are being implemented, तो उसकी फिर आपको डिटेल पे पता होना चाहिए. So इसी की एक और व्यू है, सिमिलर है, और एक और व्यू है कि जी if you are accessing it, so if you are, let's say, dealing with the bare metal service, which is Ironic, so Ironic is accessed through Ironic dash API. So there is Ironic database as well. There is a queuing manager as well. So Ironic API sends the accesses to the Ironic conductor. So they are being queued in a queue. One Iron conductor serves them one by one, and then it has multiple drivers through which actually it connects to multiple PXE based systems. So they need to be PXE based. अभी आपको पता है PXE जो UEFI based जितनी भी BIOS हैं उनके साथ ये by default आता है. And if you are accessing to heat, so yeah, you get an access to heat API. So heat API जो है अगर आपने उसको उस पे करना हो Amazon based पे, तो they have an API with the heat dash API dash CFN. So Amazon based के ऊपर आप इसको orchestrate करवा सकते हैं. So the similar is for all the other modules. Now we will have a look on these core OpenStack modules. Give me 1 minute, and then we will proceed. Okay, so these are the core modules: Horizon, Nova, Neutron, Keystone, Glance, Cinder, Swift, Ethan, Telemetry. One by one, the first one is Horizon, a very simple module. It's actually a dashboard which provides you a web-based access to the OpenStack services. So all the users, they get logged in to the dashboard, and eventually this dashboards provide you an access to the relevant APIs to access some specific resources. It's been implemented in Django framework, which is Python based, and it's quite manageable, extensible, and has a very flexible architecture. So this is the look of Horizon dashboard. So the Horizon dashboard, if we look at this, so you can see variety of types of components here. So this is the OpenStack branding, and there is dashboard for project, specific project or admin based. Then you have a panel group. You can switch between different projects. Then you have different panels, like you can have instances, you can have volumes, you can have images, then access and security. You can manage your networks as well. You can define your own network topology. And here is the dashboard view, which is showing you like how many security groups you are using, how many floating IPs you are having, how many virtual CPU cores you are using, how many instances are there, how much RAM usage is there. So this gives you your usage statistics, current and historical. So here is the user info as well. So you get an access to this dashboard, and this dashboard consists of actually these modules. So there is an API, low-level API to the OpenStack services. Then there is a web browser-based access through the Django framework. So you have test infrastructure as well along with this. Then main things are your views. So in the views, you do have these dashboards, panels, tabs, data tables, etc. And you have the framework as well, which gives you the workflow through which you can access pages. Then there is Nova, which is one of the most important module in your OpenStack. It's a compute module, and Nova consists of multiple APIs. So the most important and the major API is Nova API, through which you get connected to the Nova. Any external service gets a connection to the Nova through the Nova API. It's compliant with the Amazon EC2 as well. So you can have an access to the Amazon EC2 based images as well.
There's Nova Console, Nova Cert Object Store, Nova Compute, Nova Database is there as well. Most of the components, they have their own data store as well to manage their own operations. तो वो हर एक का अपना अपना कोई ना कोई data store जरूर होता है. It's not the general database, it's the database for Nova. It does not mean कि जी Nova के ऊपर जो आप applications run करेंगे, if they are going to use a DB, so it's going to be this DB. No way. This is for its internal operations. जो Nova के operation is internal DB है. A user is not going to have a direct access to this Nova DB. ठीक है, ये internal आपका जो OpenStack का जो software stack है, it has only access to this Nova DB, and it's actually through Nova API. There's a queuing system as well. So ये दोनों चीजें आपको एक से जगह मिलेंगी, कोई ना कोई data store और कोई queue वगैरह आपको मिल रहा होगा. Then there is Nova scheduler as well, Nova conductor, and Nova console authentication. क्या करते हैं ये चीजें जो इनमें इम्पोर्टेंट है? Nova API, इसका काम क्या है? It's an interface to the Nova actually. और Nova API जो it accepts and respond to the end user compute call, API calls, जो भी कोई end user किसी किस्म की compute API calls देता है, so they go to the Nova API, and Nova API accepts them and gives a response to them, and so it gives a support to the OpenStack Compute API, Amazon EC2 API, and a special admin API. ठीक है, अगर आपके कोई privileged users हैं तो उनके लिए ये होती है, which you can actually turn off or destroy the general users compute instances as well. नोवा एपीआई के थ्रू ही आपकी ज्यादातर जो ऑर्केस्ट्रेशन इंजन जो है वो भी इनिशिएट करता है. दे आर इवेंचुअली बीइंग इनिशिएटेड थ्रू नोवा एपीआई, और नोवा एपीआई जो ये आपकी जो ऑर्केस्ट्रेशन एक्टिविटीज है उन्हें इनिशिएट करता है, जैसे आपने कोई इंस्टेंस रन करना हो, एंड इट हैज some sort of policies as well जिनको ये इन्फोर्स कर रहा होता है. लाइक आपकी कोटा एपीआईज हैं, वो कोटा किसी भी किस्म का हो सकता है, वो आपके अमाउंट ऑफ टाइम यूटिलाइजेशन का हो सकता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन का हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन व्हाटएवर कोटा यू हैव सेट. देन कोटास आर वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लाउड, ये याद रखिएगा, क्योंकि खासतौर से अगर आप पब्लिक क्लाउड की बात करते हैं तो आप कोटास और कोटास के साथ अलार्म्स को सेट कर रहे होते हैं, ट्रिगर्स को सेट कर रहे होते हैं, because if something exceeds to that quota or वो customer memory, that can be a problem, and if something exceeds to that quota and the user is not having that much financial available, तो वो भी इसके लिए problem हो सकता है. Then there is Nova scheduler. So scheduler का काम वही जैसे आपके किसी भी scheduler का होता है. So it does the scheduling of actual instances. So it takes a virtual machine instance request from the queue and determines where it should run. ठीक है, तो कहाँ पे किस machine जो host machine है उसके ऊपर run करना है. तो जब भी आपका इस तरह का आपका cloud providing platform होता है, so you generally have a controller node. तो ये जो है ये Nova scheduler जो it's been hosted on a controller node. Nova भी जो main वो आपके ये सारे जो components हैं controller node के ऊपर और set of controller nodes के ऊपर होते हैं. And then there are so many host nodes. जहाँ भी आपने computation करनी है, storage करनी है, कुछ भी करना है, they are going to be your host nodes. तो ये जो है ये compute के जो compute host nodes होते हैं, उनमें से किसके ऊपर schedule करना है, कौन सा ideal है उसके लिए, it perform that decisions and it schedules on to that. So it does the filtering and weighing. So it communicates with the compute manager of the compute nodes. जो hosts होते हैं जहाँ पे आप जो कोई computation का काम करते हैं उन्हें हम compute nodes कहते हैं. तो it performs a computation through a remote procedure calls to them और उनके ऊपर फिर eventually इनको schedule करवाते हैं. Nova Compute जो है it actually worker daemon worker process है, daemon process है which periodically runs, and इसका काम क्या होता है? It creates and terminates virtual machine instance via hypervisor requests. तो जो भी आपके compute nodes होंगे उनके ऊपर आपको Nova Compute होगा. Nova Compute का काम क्या है? आपका जब भी ये काम होना है, Nova Scheduler ने कहा कि जी compute node number let's say 10 के ऊपर किसी को execute करना है, so it's going to communicate with the compute Nova Compute. And Nova Compute जिस machine के ऊपर है उसके ऊपर कोई ना कोई आपकी virtualization type 1 की जनरली होती है, तो type 1 की कोई virtualization वही होगी, let's say vmware based है या zen server based है,
वो जो भी हाइपरवाइजर होगा उसका VMware का ESXi अगर रन कर रहा है, so it's going to communicate with that hypervisor. So it gives you support for variety of जितने भी आपके famous hypervisors हैं, उनकी support आपको OpenStack दे रहा होता है, so it communicates with that. और जो भी कंप्यूट नोड के मतलब डेटा है और जितनी भी एक्टिविटीज हैं, दे आर बीन स्टोर्ड इन नोवा डेटाबेस। तो उस डेटाबेस के साथ जितनी इंटरेक्शन करनी है, दिस इज बीन डन थ्रू नोवा कंडक्टर। ठीक है, तो नोवा कंडक्टर उससे कोलैबोरेट करके काम। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू गेट एन एक्सेस टू अ नोवा थ्रू नोवा एपीआई। सो नोवा एपीआई की जो वो एक्सेस रिक्वेस्ट हैं, दे आर इंक्लूड इन अ क्यू, और बाकी उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं आपके कंप्यूटर नोड्स के, उनकी वो नोवा डेटाबेस में होती हैं। इवेंचुअली नोवा स्केजुलर जो है उनको फिर एग्जीक्यूट करने के लिए काम करता है। नोवा स्केजुलर जो है वो इट गेट कनेक्टेड टू द डिफरेंट नोवा कंप्यूटर नोड्स, और फिर इसी तरह हर नोवा का अपना वॉल्यूम भी है और फिर उसका नेटवर्क भी है। तो ये एक वर्कफ्लो दिया हुआ है, आपको सैंपल वर्कफ्लो है। Let's say a user wants to get connected and wants to execute some VM. तो उसके लिए सबसे पहले user is going to connect through the dashboard or command line interface and going to be get authenticated with the Keystone. So Keystone उसको authenticate करके देता है. Once he is authenticated, तो फिर वो Nova API को वो कॉल चली जाती है। जब नोवा एपीआई के पास कॉल गई है तो अभी तो ऑथेंटिकेशन हुई है, नोवा एपीआई के पास आके उसकी ऑथराइजेशन होगी, और ऑथराइजेशन जो है वो बताएगी कि जी कैन ही हैव एन एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर सर्विस और नॉट। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑथेंटिकेशन सिर्फ होती है जो एक्सेस देती है टू द ओपन स्टैक, लेकिन हर सर्विस के लिए ये ऑथराइजेशन होती है विद द कीस्टोन, वो टोकन बेस्ड ऑथराइजेशन। So once it's been authorized, so it checks with the DB, जो नोवा DB है, अच्छा जी ये सर्विसेज जो हैं ये अवेलेबल करवानी है, तो ओके ये इसके लिए अवेलेबल हैं या नहीं है हमारी रिसोर्सेज। सो इफ इट इज अवेलेबल, इट्स बीन एनक्यूड। एनक्यू होने के बाद नोवा स्केजुलर के पास जाती है। नोवा स्केजुलर का काम है कि जी के इसको स्केड्यूल करे। अब उस स्केड्यूल करने के लिए अगेन जो नोवा स्केजुलर, इट लुक्स इनटू द नोवा डीबी, और नोवा डीबी में देखता है कि जी अच्छा कौन सी जगह के ऊपर इसको स्केड्यूल किया जा सकता है। जहां पे भी स्केड्यूल करना है उसके लिए ये इसको क्यू रिक्वेस्ट भेज देता है। उस क्यू रिक्वेस्ट में जब वो भेजता है तो इट गोज टू द दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस, वो जो भी इंस्टेंस वहां पे मौजूद होता है उस इंस्टेंस के पास जाती है। वहां पे नोवा कंप्यूट होता है। नोवा कंप्यूट ने जिस भी इंस्टेंस को रन करना है उस इंस्टेंस को वहां लेके आएगा, उसके इमेज को लेकर आएगा। ठीक है, इमेज कहाँ पे स्टोर होते हैं वो आपको पता है कि थ्रू ग्लास स्टोर हो रही होते हैं। सो इट विल गो इनटू ये ग्लास के पास जाएगा, ग्लास एपीआई के पास। ग्लास एपीआई के पास जो ही ये रिक्वेस्ट करेगा तो जो पहली चीज ग्लास एपीआई चेक करेगी वो कहेगी कि क्या ग्लास एपीआई की एक्सेस है या नहीं है। सो इट्स गोइंग टू बी गेट ऑथेंटिकेटेड विद दी अगेन विद द कीस्टोन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हर बात वो जो है ना कीस्टोन से ऑथेंटिकेट होता है। ओके, ये ऑथेंटिकेट हो गया, so eventually it will tell kg it will give him access to the through the image store to the actual image, so image will be brought into here। फिर ये उसके बाद उसके ऊपर कहेगा जी कि अच्छा जी मैंने कोई सर्विस परफॉर्म करनी है, लेट्स से क्वांटम सर्वर पे करनी है, तो क्वांटम पे उसको परफॉर्म कर देगा। क्वांटम के ऊपर अगर वो उसको परफॉर्म कर रहा है, इट्स बीन completely चेंज विद द ये जो अब आपका आयरॉनिक है उसके साथ आपकी हो सकती है। देन कीस्टोन जो उसको ऑथेंटिकेट करके बता देगा यू कैन आल्सो अटैच अ वॉल्यूम स्टोरेज, जैसे सिंडर है तो सिंडर को भी अटैच कर सकते हैं, तो वो सिंडर को भी इसके साथ अटैच कर दिया जाएगा सो दैट इट कैन हैव एन एक्सेस। एंड अगेन चाहे सिंडर हो चाहे क्वांटम है ग्लास है, कोई भी एक्सेस करेगा जब फर्स्ट टाइम तो इट नीड्स टू बी गेट ऑथेंटिकेटेड थ्रू दी कीस्टोन। तो कीस्टोन जो उसको ऑथेंटिकेट करेगा, ऑथेंटिकेट करके कंफर्म करके वापस आएगा, और इवेंचुअली नोवा कंप्यूट जो है टू द हाइपरवाइजर इट्स गोइंग टू लॉन्च। अब उसके पास वो भी आ गई है, इंस्टेंस भी आ गया, इमेज भी आ गया है, और उसको उस वीएम के ऊपर लॉन्च कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ है ना हाइपरवाइजर। तो ये इंटरनली ये सारे काम हो रहे होते हैं, ये कॉल्स जा रही है और हमें इट फील्स टू अस कि जी ओके इट्स वेरी सिंपल ये काम।
The next one is Neutron. Neutron is the networking engine, networking module, or Neutron जो it's primarily responsible for providing networks for different VMs in stack system. Different किस्म की network configurations आप OpenStack में कर सकते हैं. Or Neutron is just like any other module. It's a pluggable, scalable, API-driven module through which you manage the networks and IP addresses, and it provides APIs to make complex network topologies. किस्म की जो है topologies आप create कर सकते हैं, और conformity भी provide करता है to different network vendors उनके drivers के साथ और उनके products के साथ. Again, like any other module, it relies on Keystone for authentication and authorization of all API requests, or so API calls के through उनके साथ communicate कर रहा होता है. जब हम बात करें न्यूट्रॉन की नेटवर्किंग की, so there are different types of models. देखते हैं next slide. So typically, you get an access to the internet. You have a cloud controller node. Then you have computer nodes. So the computer nodes, they are connected to this controller node and to the internet as well, through which through this internet you can have an access from outside your enterprise as well. Okay, so Neutron में, so you are connected through a public network, और उस public network के through आप connected हैं. You have a controller node, so you do have variety of types of services like database, message queuing, API services, scheduler, identity, image, block storage. तो ये main आपका module है, which is the controller node. So आपका जो OpenStack होता है, it's been installed on a controller node. Then you do have a compute nodes. ठीक है, computer node लिखे हुए हैं, these are compute nodes. तो इन compute node के ऊपर you have Nova network, or Nova network के through आप connect भी हो जाते हैं, and you also have Nova compute as well. So Nova compute के through basically इस hypervisor को invoke किया जाता है, और आपके यहाँ पे किसी भी VM को execute करवाता है. You can also have block storage nodes, you can have ephemeral storage nodes, and a variety of types of nodes as well, जिनके ऊपर आपकी ये सारा काम हो रहा हो. अब इसकी जब configuration होती है, तो configuration can be done through different mechanisms. उसके अंदर again whatever configuration is, so Neutron works in a way that you do have a Neutron main server जो आपका Neutron का main request वगैरह जो है वो accept करता है. Then you have job queues as well, जो भी आपकी communication होनी है उसके लिए queues हैं. Then you have Neutron plugins, you have Neutron agent, and then you have a network provider. They work together to provide you. नेटवर्क मैनेजमेंट जो इसकी है, उसमें जैसे मैंने पहले कहा, आपका कंप्यूट नोड है, आपका कंट्रोलर नोड है, एंड देन यू डू हैव अ नेटवर्क. तो नेटवर्क नोड अगर आप अलग कर लेते हैं, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये रिकमेंडेड होती है कि एटलीस्ट यू नीड टू हैव 3 टाइप ऑफ नोड्स: कंट्रोलर नोड, नेटवर्क नोड, एंड कंप्यूट नोड. कंप्यूट नोड जनरली जो है वो डेफिनेटली मल्टीप्लिसिटी में होंगे, बहुत सारे कंप्यूट नोड होंगे जहाँ पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. सो नेटवर्क नोड के ऊपर यू आर गोइंग टू हैव न्यूट्रॉन, बाकी सर्विसेज आपकी कंट्रोलर नोड पे होंगी, और कंप्यूट नोड पे से कंप्यूट की आपकी सर्विसेज. ठीक है, सो कंप्यूट नोड एंड network node, they can be directly connected through a data network, and then eventually the network node is connected to the external network through a router, and controller node can also have an access. So generally they ask you to have 2 public IP addresses for this type of configuration. अब ये डिप्लॉयमेंट आ गई, क्या क्या डिप्लॉयमेंट्स आपकी हो सकती हैं. द मोस्ट सिंपलेस्ट वन इज अ सिंगल फ्लैट नेटवर्क, इन विच यू हैव अ शेयर्ड नेटवर्क. ऑल द टेनेंट्स, जो टेनेंट होता है वो बेसिकली आपका कोई भी जो यूजर है और उसको जो प्रोजेक्ट है, दैट इज अ टेनेंट. सो इफ यू आर हैविंग मल्टीपल tenants or projects, or so eventually the services, they are actually having a shared network. तो इस राउटर के थ्रू दे आर कनेक्टेड. सो जो आपका सर्विस प्रोवाइडर होगा, इज गोइंग टू हैव अ पूल ऑफ आईपीस अवेलेबल. जैसे ये 30.0.0.0 की है, विद 22 का सबनेट है आपका, और इसके ऊपर ये कनेक्टेड है. सो एवरीवन इज कनेक्टेड थ्रू दिस शेयर्ड नेटवर्क. दूसरा इसके अंदर मैकेनिज्म है मल्टीपल फ्लैट नेटवर्क. ये सिंगल फ्लैट था, ये मल्टीपल फ्लैट नेटवर्क. मल्टीपल फ्लैट नेटवर्क के अंदर यू कैन हैव टेनेंट ए. अगेन टेनेंट ए की एक और VM है,
then tenant B, tenant C, and tenant D. ठीक है? ये जो tenants हैं, they are having an access to this network. So ये जो network है, एक shared network one है. So this is 30.0.0.0. This is 30.0.1. This is 30.0.2.0. ठीक है? तो ये अलग-अलग network कर दी हैं और they are connected to through this router. तो अगर इस tenant ने इस tenant से communication करनी है, so it's going to do this communication through this router. ठीक है? तो ये इस राउटर के थ्रू ये कम्युनिकेशन होगी या इससे कम्युनिकेशन करनी है, so it's going to be done through this router. So it's going to be using the public internet as well. फिर एक और इनकी कॉन्फ़िगरेशन है which is mixed flat and private network. अब इसके अंदर क्या है कि ये tenants तो मौजूद हैं, सिंगल फ्लैट जिस तरह था उस तरीके से आपस में शेयर्ड नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, but they also have a private network among them. अब यहाँ पे शेयर्ड नेटवर्क के थ्रू तो कनेक्ट होते थे, जैसे यहाँ भी है, यहाँ भी कनेक्टिविटी तो है दोनों केसेस में, लेकिन जो कम्युनिकेशन हो रही है इट्स गोइंग टू बी डन थ्रू दिस राउटर. ठीक है? राउटर के थ्रू ही कम्युनिकेशन होगी, पब्लिक नेटवर्क के थ्रू होगी, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क. यहाँ पे क्या कर दिया है कि दे डू हैव अ प्राइवेट नेटवर्क एज वेल. सो जो टीनेट ए है ये उसका अपना प्राइवेट नेटवर्क है, टीनेट सी का अपना प्राइवेट नेटवर्क है. दिस इज व्हाट बीन कॉमनली बीन डन इन अ क्लाउड कि जी अपनी आपकी रिसोर्सेज का आप एक अपना प्राइवेट नेटवर्क बना दें जो वे वीपीएन होते हैं. So now this tenant has two addresses, one public address like 30.0.0.2.3 and also local private addresses as well. Class A के ये private addresses 10.0.0.2 ये दो दिए गए. तो अगर इन्होंने आपस में communication करनी है इन दोनों ने, they are going to do the communication through this. तो चूंकि उनके दरमियान में एक private network भी मौजूद है, ठीक है? तो ये इसके through communication करेंगे. And here they are going to do the communication through this private network. आपको वैसे भी पता है कि जो पब्लिक क्लाउड्स हैं उनके ऊपर जब आपका पब्लिक नेटवर्क पे जब ट्रैफिक जाती है तो ट्रैफिक इन और आउट का उसमें भी चार्ज किया जाता है. For that it's also important. Then there is a provider router with private network. So अब क्या हो रहा है कि जी वो प्रोवाइडर ने अपना राउटर भी लगा. So once a provider is having a router, ठीक है, डायरेक्ट एक्सटर्नल नेटवर्क के ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि उसका अपना राउटिंग मैकेनिज्म है, इंटरनल राउटिंग मैकेनिज्म है, which is a private routing mechanism. तो और इस प्राइवेट राउटिंग के बाद उसका एक पब्लिक आईपी उसने असाइन किया हुआ है. So in this case, the good thing is कि अब ये अलग-अलग नेटवर्क है, ठीक है, ये इसका प्राइवेट नेटवर्क है, इसका प्राइवेट नेटवर्क है, but the communication among tenant A and tenant C ये तो आपस में होगी प्राइवेट नेटवर्क पे, लेकिन जो कम्युनिकेशन अमंग टेनेंट ए और टेनेंट सी है, इट्स नॉट गोइंग टू बी डन थ्रू दिस राउटर, इट्स गोइंग टू बी डन थ्रू दिस प्रोवाइडर राउटर. ठीक है? क्योंकि वो राउटर जो है उसको राउट कर देगा कि अच्छा ये लोकल है, सो इट्स गोइंग टू बी डन थ्रू दिस. ठीक है? तो ये इसका अपना प्राइवेट नेटवर्क है, इसका अपना प्राइवेट नेटवर्क है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी डन थ्रू दिस. ये उसको मैप कर रहा होगा इसका जो प्रोवाइडर का राउटर है, बिकॉज ही नोज कि ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस था ये यहाँ पे मौजूद है हमारे पास. And then you can have this thing कि per tenant router with private network है, हर राउटर हर एक का अपना. तो इसको ये भी किया जाता है, this is generally been done through virtual routers. तो आपका virtual router है, हर एक का अपना, तो उस राउटर के थ्रू जो उसकी कम्युनिकेशन हो रही है. तो यस, अगर इन्होंने इसको कम्युनिकेशन करनी होगी इस टेनेंट सी के साथ ए और सी ने, so this is going to be done through external network. ठीक है? पब्लिक के थ्रू ही जाएगा, पब्लिक राउटर के थ्रू ओके. लेकिन अगर टेनेंट सी ने कि इसने और इसने करनी है, ये दोनों जो हैं अलग-अलग उनके अपने दो नेटवर्क थे. यहाँ पे अगर इसने इससे करनी है तो ये तो डायरेक्ट यहाँ से हो जाएगी, लेकिन अगर इसने इससे करनी है तो इट्स नॉट गोइंग टू बी डन थ्रू पब्लिक, अगेन इट्स गोइंग टू बी डन थ्रू टेनेंट सी राउटर. जबकि इसने अगर इसके साथ करनी है तो इट कैन नॉट बी डन थ्रू here, it is going to be done through this public router. ठीक है? तो वो public sphere पे चलेगा. So now we will discuss about the Keystone. Keystone is the identity service and it's used to authenticate and authorize the users to have an access to OpenStack and its given resources. So Keystone कैसे काम करता है? In similar way. So it's the identity service, or it's a token-based authentication. So first the user enters his or her credentials, or
जो यूजर नेम पासवर्ड होते हैं, once it's get authenticated, the token is been issued to the user, और वो token के अंदर information होती है about the user credentials along with the services he can have an access. और कीस्टोन जो इसको मल्टीपल एंड पॉइंट्स के ऊपर सपोज किया जाता है सो दैट मल्टीपल सर्विसेज कैन एक्सेस इट साइमल्टेनियसली, और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली आपकी सर्विस है. So it provides four primarily service. The first one is identity. So user की जो information है, authentication है, it's called identity. And then there is a token. A token is a replacement for the identity. So internal जितनी भी services को access किया जाता है, it's not with the identity, it's been done through the token, जो assure करता है कि the user is authorized to which services or how much is the level of access. Then there is service catalog. जितनी भी आपकी services जो कि उस system के अंदर मौजूद होती हैं, उनकी catalog भी Keystone contain करता है. And then there are policies as well. एक rule engine होता है जो basically rule management करता है for all the users और उसकी जो भी authorizations हैं उनके बदले. Then identities में user है आपका. User जो है वो आपका as a large जो account holder होता है जिसके account credentials होते हैं, and it can be associated with one or more tenants. Tenant क्या होता है? Tenant is a group of users जिसको हम project या tenant कहते हैं, और इसमें a tenant can have an access to multiple type of resources. So a user can create multiple tenants, and every tenant can have, or a project can have different accesses to multiple types of resources. Then a role is actually a combination of user and tenant, because both of them they can have a multiplicity, and a rule is in related to a policy, what a user or a tenant in combination in a role can perform or what they cannot perform, how they can perform. This is called a rule. Keystone या identity manager जो है, again उसकी भी इसी तरीके से आपकी multiple APIs हैं through which you actually get an access to the resources. Mechanism क्या है? For example, if Alice wants to have an access and wants to launch a server, so what he's gonna do is it's gonna access the OpenStack. So OpenStack को access करने के लिए first he's going to enter its server. Why it's giving me meeting will be end in 10 minutes. Okay. अच्छा, probably आप लोग पहले से इसमें मीटिंग में शामिल थे. Okay. So Keystone जो है, it's going to give him an access, और वो basically access होगी to the OpenStack. So जब वो access देगा, so it's going to create a temporary token, और वो जो temporary token है, it's going to be used eventually to access all the resources along with a generic catalog has been set. So वो catalog की base पे Alice then will request the tenants she has to have an access to the resources, और वो उसके बाद जो है वो सर्विसेज जो है वो भेजी जाएंगी उसको. तो उसके जो credentials हैं, if she wants to have an access to any specific service, वो भेजे जाएंगे to the Keystone. जो भी सर्विस है, फॉर एग्जांपल लेट्स से शी इज गोइंग टू लॉन्च अ सर्वर, तो वो सर्विस जो है वो वैलिडेट की जाएगी कि क्या उस सर्विस के लिए वो टोकन जो है वो वैलिड है या नहीं है. अगर तो वैलिड है तो उसकी एक्सेस परवेन दे दी जाएगी. वो एक्सेस परवेनिंग जो है वो एलिस को मिल जाएंगी, और एलिस को पता लगेगा कि एलिस टेनेंट जो इट्स ऑथराइज्ड टू एक्सेस दैट सर्विस. So the token matches the request, and token belong to user Alice. So this has been authenticated. So then Alice upon this request वो जो Alice ने की थी, सर्विस जो है उसकी एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट पे Alice की तरफ से चली जाएगी, और सर्विस विल क्रिएट अ न्यू सर्वर, और वो जो सर्वर है वो क्रिएट हो जाएगा. Then the next service is Glance. Glance जो है it's imaging service. आपके जो images हैं they are being stored in Glance API, और Glance जो है उसके थ्रू आप इन images को access कर रहे होते हैं. So Glance is an image as a service, or so whenever you need to have an on-demand VM images, it started with that concept.
So what the glance does, glance contains a catalog of all the types of images which are available, or along with the real images stored in attached devices, which are generally on object storages. तो object storages के ऊपर इनको store किया जाता है जो actual images होते हैं, and then it has a generic API. तो जो भी services जो हैं जो उसको access करना चाह रही हैं उनके लिए API मौजूद होती है, so you can have an access to those images and you can make them live with the help of this Glance API. So it supports, store and provide any kind of image abstracting the storage and other internal details. तो वो भी सारी Glance के अंदर दी गई होती हैं. Glance काफी सारे image formats जो उनको support करता है, जिनमें RAW है, QCOW है, VHD है, VMDK है, ISO है, VDI है, AKI है, ARI है और AMI है. जो जनरल यूज होने वाले हैं वो आप देख सकते हैं कि तकरीबन सबको ही कर रही है, along with जो Amazon का Amazon मशीन इमेज है, MI है, उसकी भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है OpenStack. Glance provides discovery, registration, and delivery services for your server images and also for the disks associated with them. Or so it's a storage repository for the actual image file, and it supports all the normal file system. Like you can have those block devices. You can have access to Amazon S3 as well, HTTP and Swift as well. Major जो इसकी APIs हैं उनमें Glance API है which accept image API call, so this is an entry point to the Glance. So Glance API calls, it accepts all the incoming requests जो कि आ रही होती हैं Glance को, और उसमें major जो duties हैं they are discovery of images, image retrieval and image storage. तो ये main काम जो करने हैं उनके लिए ये request को handle करती है. Then there is Glance registry, और Glance registry जो उसके पास images के मतलब information होती है which is been stored as a metadata. तो वो metadata जो है वो images की information contain कर रहा होता है. And then there is Glance database. उस Glance database में जो है आपका image का metadata store किया जाता है. तो registry जो है वो actually उसको store करती है into the database या process करती है और retrieve करती है from the registry, from the database. तो ये काम Glance registry का रही होती है. आर्किटेक्चर या जो उसका प्रोसीजर है वो उसी तरह ही है कि Glance API जो है it will accept the incoming request from any external component. It can be from Nova or directly from using some API, and it will request the information from Glance registry. So API जो आगे delegate करती है Glance registry को, Glance registry जो वो Glance DB से information को fetch करती है, और उसके बाद जब वो information आ जाती है it gives back to the Glance API. और डेटा वो जो फिर एक्चुअल डेटा या वो जो एक्चुअल इमेज है जिसको एक्सेस करना होगा, that can be anywhere. It can be Swift, stored in Swift, or it can be stored in Amazon S3 or anywhere. So the first it goes to the Glance API, which delegates this to Glance registry. Glance registry sends it to the Glance database, और ये उसको फिर बताती है कि अच्छा जी कहाँ पे ये इमेज जो है वो कहाँ पे stored है, और जहाँ पे भी stored होगा it can have an access from there. Generally they are being stored in Swift. It can be stored on a traditional file system as well. Can be on S3 or RDB. It can be anywhere. Then there is volume storage. ठीक है, तो दो तरह की main storage types हैं. एक volume storage है, दूसरी object storage है. Volume storage जो आपकी टिपिकल स्टोरेज जिस तरह की हम अपने कंप्यूटर्स में यूज करते हैं जो कि फाइल सिस्टम बेस्ड होती हैं, किसी ब्लॉक पे होती हैं, और जो ऑब्जेक्ट स्टोरेजेस हैं दे स्टोर द डेटा ईच एंड एवरीथिंग इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स कैन बी वेरी स्मॉल, ऑब्जेक्ट्स कैन बी वेरी large, and a whole object is logically being considered as one entity. Cinder जो है it's an module to provide block storage as a service, and it manages the creation, attaching and detaching of the block device. आपको पता है कि सर्वर्स के साथ अटैच डायरेक्टली सर्वर्स का पार्ट नहीं होती है स्टोरेजेस, जो सर्वर का पार्ट होती है दैट इज एफेमेरल स्टोरेज. जो ये स्टोरेज है इट्स अ परसिस्टेंट स्टोरेज लाइक जिस तरह इमेज सॉरी आपकी जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, बट द टाइप इज के आपका ये ब्लॉक स्टोरेज होती है. और ये इसी तरह है जिस तरीके से आपकी सी ड्राइव के अलावा बाकी जितनी ड्राइव्स होती हैं
वो मौजूद है सिस्टम में। बट द क्लाउड के ऊपर ये सिस्टम डिफरेंट होता है कि यू कैन अटैच दिस स्टोरेज टू एनी, वो चाहे ब्लॉक स्टोरेज है या आपकी ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, कोई सी स्टोरेज हो वो आपकी अटैच की जाती है। सो दिस ब्लॉक स्टोरेज इज बीन अटैच टू एनी रनिंग इंस्टेंस, वो मल्टीपल को भी हो सकती है, किसी और एक वक्त में एक को हो सकती है, बाद में किसी और का आप अटैच कर सकते हैं। सो यू एक्चुअली डज इट फॉर मोर स्केल। Or block storage is quite good for performance sensitive scenarios. Depend करता है इसकी अपना application area. For example, if you are storing the things into files or file based manipulation करनी है, so the volume storage is good. You are storing the things into databases, particularly into relational databases, then the file storage, volume storage or block storage is good. But if you want to have an access to sequential data, which is being stored as an object, then object storage is better. For example, if you're accessing images, videos, or VM images, though, in that case, instead of using block storage, we generally use object storage. So it is a component-based architecture, so you can add new components and new feature as well. It's highly available, so you can scale it very quickly and can accommodate a huge amount of workloads as well. Cinder जो है, it's really file tolerant, and so it isolate process so that failures जो हैं वो एक दूसरे पे impact ना डालें, और failures जो हैं generally they are easy to diagnose, debug and rectify. और इन्होंने कोशिश भी की है, जैसे आप देखा है कि जी दे प्रोवाइड एपीआईज व्हिच आर compatible with popular public clouds like Amazon EC2. Persistent storage होती है obviously, और the data volumes they can be attached to any VM instances. You can also have a boot from volume as well, or then they can detached as well from instances. Instance अगर crash कर जाए तो उसका कोई जो आपका compute instance होता है, अगर वो crash कर जाए तो उसका कोई impact आपकी volume storage पे नहीं होता. So it does not have any impact कि जी अगर उसका crash हो रहा है तो इसके ऊपर भी कोई crash हो जाएगा. And itself as a volume storage they generally do have a replication, तो इनकी replication और backups किए जाते हैं, so that in case of any storage failure the data can be retrieved as well. Cinder जो है उसको अगर आपने अटैच करना हो उसके वॉल्यूम को किसी भी इंस्टेंस को, तो फर्स्ट थिंग इज वॉल्यूम ड्राइवर जो उससे वो कनेक्ट करता है, और वॉल्यूम ड्राइवर जो है उसकी इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है टू द नोवा, और नोवा जो है वो स्टोरेज से फिर कनेक्टिविटी करती है, और बाय यूजिंग दैट वॉल्यूम ड्राइवर, तो हर वॉल्यूम का अपना ड्राइवर अपनी कनेक्टिविटी का मैकेनिज्म है, और फिर उसको अटैच इवेंचुअली कर दिया जाता है विद दैट हाइपरवाइजर जिसके ऊपर आपने होस्ट किया होता है किसी भी एक इंस्टेंस को, वीएम इंस्टेंस को. द नेक्स्ट वन इज स्विफ्ट. स्विफ्ट जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, इन दोनों का फर्क आपको आई थिंक क्लियर कर दिया हुआ है. ऑब्जेक्ट स्टोरेज में यू स्टोर द थिंग्स इनटू ऑब्जेक्ट, अंडरलाइन जैसे भी है, बट टू द यूजर it's going to be like whatever he is storing, it's being stored as one entity. जबकि जो वॉल्यूम स्टोरेज है उसके ऊपर जो एक्सेसेस है, it's in volumes, it's in blocks. Object storage जो है, it's a very robust system, and जो major चीज होती है object storage पे, that is it provides you high level of scalability काफी ज्यादा होती है, and it's quite good for unstructured data. ठीक है, कोई भी objects हो सकते हैं, like आपका images हैं, videos हैं, machine images हैं, independent files आपकी हो सकती हैं, and they are accessed as a bits, stream of bits के फॉर्म में वो करते हैं, and generally they are accessed through REST APIs और HTTP interfaces. और आप इसमें डेटा को जो किसी ब्लॉक या फाइल लेवल पे एक्सेस नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता कि आप पार्शियल कुछ डेटा को एक्सेस करने, द होल डेटा इज गोइंग टू बी एक्सेस. ठीक है, और आर्काइव्स के लिए, बैकअप्स के लिए it's really very good, and it provides you a very good level of availability and throughput. Swift जो है, as I told you, it's quite scalable, और जैसे जैसे आपका क्लस्टर ग्रो करता है, it remains compatible with that, और आप इसको इवन कमोडिटी हार्डवेयर पे भी रन कर सकते हैं, आम जो आपका हार्डवेयर है उसके पे भी कर सकते हैं, एंड इट प्रोवाइड्स नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बिकॉज इट जनरली performs the backups and replicas, and it provides eventually consistent replicas, means कि सब जितने भी
रेप्लिकाज होते हैं सबको साथ साथ बराबर जो हैं अपडेट्स जा रही है सो दैट एवरी रेप्लिका शुड बी इन द सेम स्टेट आर्किटेक्चर इसके इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स यूज होते हैं लाइक रिंग है प्रॉक्सी सर्वर ऑब्जेक्ट सर्वर यहाँ दिए हुए हैं so a client if he wants to have an access to the swift based cluster so it connects to it so generally there is a load balancer which divides the load among multiple proxy servers so ये proxy servers के through आती है और ये proxy servers जो हैं ये फिर swift के cluster से कनेक्ट करते हैं स्विफ्ट क्लस्टर जो जनरली इट्स कनेक्टेड थ्रू अ रिंग और उसके अंदर जो है आपके जो एक्चुअल स्टोरेजेस हैं दे आर गोइंग टू बी ऑन इन मल्टीपल जोन ठीक है जनरली आपको पता है क्लाउड को डिवाइड किया जाता है इन मल्टीपल जोन्स मल्टीपल रीजन्स मल्टीपल डेटा सेंटर्स तो उनके अंदर ये होगी तो ये अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कि जी आपने कितनी बड़ी उसकी इम्प्लीमेंटेशन की हुई है दिस इज द वेरी बेसिक लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ पे आप उसको multiple zones में at least divide करते हैं and if you have a more complex architecture then within a zone you can have multiple data center then data center together can constitute a zone and the zone together can constitute a region and you can have multiple regions in your cloud implementation तो इसी तरह प्रॉक्सी सर्वर्स के थ्रू आएगी रिंग जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू द रेलेवेंट ऑब्जेक्ट सर्वर तो ये जो ऑब्जेक्ट सर्वर इट मैनेजेस के लोकल डिस्क के ऊपर उसको कैसे स्टोर करना है और कैसे रिट्रीव करना है बट द क्लाइंट एक्चुअली गेट्स एन इंटरेक्शन इवेंचुअली विद द ऑब्जेक्ट सर्वर so each object is replicated across multiple server they can be residing within the same data center or across और अगर क्रॉस में करेंगे तो रिस्क मिटिगेशन आपकी बेहतर होती जाती है आपके नेटवर्क या हार्डवेयर फेलियर के केस में ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है और आप अगर कोई हार्डवेयर फेलियर हो जाता है कोई प्रॉब्लम होता है तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो है वो हमेशा एक नई लोकेशन पे जो उसको मूव कर दिया जाता है और हर वक्त कोशिश ये होती है कि जी 3 कॉपीज जो है उसकी अवेलेबल हो तो जैसे पहले का इवेंचुअली कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है so it gives you a very reliable platform जनरली ऑपरेशन का तरीकाकार वही है जी यूजर जो है वो सबसे पहले ऑथेंटिकेट होता है वाया कीस्टोन टोकन उसको मिल जाता है देन यूजर जो है वो जो स्विफ्ट प्रॉक्सी सर्वर है उसको पुट या गेट की कमांड्स के थ्रू जो है वो रिक्वेस्ट करता है उस डेटा की एक्सेस की जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज में होता है प्रॉक्सी सर्वर जो है वो सिलेक्ट करता है कि जी कौन सा स्टोरेज नोड जो है उसके ऊपर वो है या परफॉर्म करना है ऑपरेशन एंड इट परफॉर्म्स द ऑपरेशन और उसको रिस्पॉन्ड करता है जनरली जो है आपकी जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज है इट्स नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेटेड विद a lot of other components except Keystone और partly with glance क्योंकि glance भी इसके ऊपर जो है वो स्टोरेज रख सकता है अदरवाइज डायरेक्टली इंटरेक्ट विद जो भी आपने इंस्टेंस क्रिएट किया उसके साथ इंटरेक्ट कर अगर कंपैरिजन किया जाए मल्टीपल ये जो स्टोरेज टाइप्स हैं 3 तरह की बेसिकली आपकी हैं एक एफेमेरल स्टोरेज है एक ब्लॉक स्टोरेज है और एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज है ब्लॉक स्टोरेज और ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो दोनों जो है वो अटैच की जाती है ब्लॉक स्टोरेज तो वैसे माउंट की जाती है ऑब्जेक्ट स्टोरेज के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं डेटा को कहीं से भी बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं और एफिमेरल स्टोरेज है दे आर पार्ट ऑफ योर इंस्टेंस वो जो इंस्टेंस है वो जो ग्लास के थ्रू वो जो आपने एक इमेज क्रिएट किया है और इस इमेज को आप रन कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क पे स्टोरेज कुछ ना कुछ कर रहा होता है सो दैट इज व्हाट एफिमेरल स्टोरेज अगर इसकी नॉलेज ही मैं करूँ आपके सिस्टम के साथ तो आपके सिस्टम में जो सी ड्राइव का एरिया होता है और उसमें जो विंडोज इंस्टॉल की होती है वो जो सिस्टम का एरिया होता है सिस्टम ड्राइव के में वो सारा एफिमेरल स्टोरेज होता है और अब चूंकि ये एक ही फिजिकल डिस्क पे होता है तो इसलिए फॉर यू इट्स ऑन द सेम फिजिकल डिस्क अदरवाइज दिस इज जो सिस्टम ड्राइव है या जो सिस्टम है दैट इज एफिमेरल स्टोरेज और वो चूंकि क्लाउड के केस में टेम्परेरी लाई जाती है और कहीं रन की जाती है आपके तो सिस्टम में वहीं पड़ी रहती कहीं और से नहीं आती ये कहीं और रखी जाती और वहां से लाए जाते हैं और एफिमेरल स्टोरेज वो बन जाती है जो कि रन टाइम उसका होता है जितने टाइम इंस्टेंस रन करेगा वो स्टोरेज रहती है उसके बाद वो खत्म और ब्लॉक स्टोरेज वैसे ही आप अटैच करते हैं और ऑब्जेक्ट स्टोरेज है वो कंटेन करती है इमेजेस को तो टिपिकल तरीका क्या होता है कि आप अपनी इमेज को जब भी वो चल नहीं रहा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो वो किसी ऑब्जेक्ट स्टोरेज में पड़ा होगा तो इन दिस केस इट्स गोइंग टू बी इन स्विफ्ट
तो जो ही आप कहेंगे इसको लाइव कर दो, एक मशीन पे, दो मशीनों पे, तीन मशीनों पे आप उसे कर सकते हैं। तो जितनी मशीनों पे भी आप करना चाहेंगे तो इट्स गोइंग टू बी लाइव देयर। उसके बाद जो है वो जितना टाइम वो लाइव हुआ होगा वहां पे, तो हर जगह पे जहां जहां उसने स्टोरेज ऑक्यूपाई की है, दैट इज एफेमेरल स्टोरेज। ठीक है। और उसके अलावा भी ऑब्जेक्ट स्टोरेज में और चीजें हो सकती हैं, आपकी वीडियोज हैं, इमेजेस हैं, और कई इंस्टेंसेस ऑब्जेक्ट बेस्ड हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीज आपकी हो सकती हैं, आपकी नो सिक्वल बेस्ड डेटाबेसेस हो सकती हैं। तो दे आर गोइंग टू बी देयर, एंड देन ब्लॉक स्टोरेज पे आपका टिपिकल फाइल सिस्टम बेस्ड स्टोरेज है। तो यूज किस लिए किया जाता है जी एफएमएल स्टोरेज को? टू रन योर ऑपरेटिंग सिस्टम इन सर्वर्स, एंड सो इट प्रोवाइड्स यू some space for running operating systems. So eventually it gives you a scratch space. And then block storage जो है, it gives you additional persistent storage. तो आपने कोई भी डीबी क्रिएट करनी है, आपने फाइल्स को स्टोर करना है इनटू वॉल्यूम स्टोरेज या ब्लॉक स्टोरेज, तो आप उसके लिए एडिशनल स्पेस को अटैच कर देते हैं। अच्छा जी 4 GB की मुझे दी है, दे देंगे ब्लॉक स्टोरेज दे दें। देन यू कैन ऑल्सो हैव ऑब्जेक्ट स्टोरेज एज वेल, जो कि जिसमें आप डेटा स्टोर करते हैं, इमेजेस स्टोर करते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आप अपने वीएम इमेजेस को स्टोर कर रहे होते हैं। इन्हीं वीएम इमेजेस को यहाँ से उठा के लाते हैं और एफएमएल की फॉर्म में वो फिर लाइव हुए होते हैं। एक्सेस जो है एफएमएल को कैसे किया जाता है? ऑब्वियसली इट्स डन थ्रू अ फाइल सिस्टम। ब्लॉक स्टोरेज है, इट्स एट अ ब्लॉक लेवल, यू कैन डू इट एज अ रॉ एट अ ब्लॉक लेवल, or you can do it through a file system, but eventually they are going to be mounted into your system. ठीक है, तो वो माउंट होते हैं, अटैच होते हैं आपके सिस्टम के साथ, they get mounted to your machine instance जो भी आपका रन कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज दे स्टैंड इंडिपेंडेंट, ठीक है, वो उस तरह से अटैच नहीं होते, कोई भी उनको एक्सेस कर सकता है इफ ही शी वट एवर द यूजर इज डू हैव एन एक्सेस परमिशन टू दैट रिसोर्स। ठीक है, तो वो उसको एक्सेस कर सकता है वो वहीं। और इसी तरह एक्सेसिबिलिटी क्या है एफिमेरल स्टोरेज की? क्या है, सिर्फ उस इंस्टेंस के अंदर है, उस वीएम के अंदर। इंस्टेंस ये नहीं हो सकता कि एक एफिमेरल एक वीएम की जो इंटरनल स्पेस है उसको दूसरी वीएम जो है उसके इंटरनल कोई एक्सेस कर ले। लेट्स से मैंने अपनी एफिमेरल में कोई फाइल क्रिएट की, टेम्परेरी फाइल क्रिएट हुई है, तो उसको कोई और एक्सेस करे, ऐसा नहीं होता। ब्लॉक स्टोरेज जो है उसको एक्सेस किया जा सकता है दूसरी वीएम से भी, होती है एक तो सिर्फ वीएम से, ठीक है, दूसरी वीएम से किया जा सकता है, लेकिन वंस इट्स गोइंग टू बी डिटैच्ड फ्रॉम वन वीएम, ठीक है, क्योंकि उसकी लाइफ एग्जिस्ट करती है ब्लॉक स्टोरेज। इसका तो मसला ये है कि ये उस वीएम से तो के अलावा तो कोई नहीं करेगा, और इसकी लाइफ जो है सिर्फ उस वक्त तक है जब तक वो वीएम है। ये वीएम खत्म हुई तो वो एफिमेरल खत्म हो जाती है, गायब। जबकि ये जो है ये अलहदा से है, ये वो स्टोरेज मौजूद है, आप उस स्टोरेज पे कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, कोई डेटा ऐड कर रहे हैं, डेटा डिलीट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो वहीं पे मौजूद है, लेकिन अभी उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। यस, आपने इस वीएम को क्लोज किया, वो डिटैच हो जाएगी, डिटैच होने के बाद कोई और आपकी अगर ऑथोराइज है तो आप उसको एक और वीएम से भी अटैच कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर, आप उसको बाय से भी एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको मल्टीपल वीएम से भी इकट्ठे एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टोरेज। देन मैनेज कौन करता है? एफिमेरल स्टोरेज किसको बिलोंग करती है? कंप्यूट को, तो ऑब्वियसली ओपन स्टैक का जो नोवा है कंप्यूट है वो इसको करता है। ब्लॉक स्टोरेज को कौन करता है? सिंडर करता है, जो ब्लॉक स्टोरेज सर्विस है। और इसको कौन करता है? स्विफ्ट करता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज को। परसिस्टेंसी कितनी है एफएमएरएल की? ऑब्वियसली जो ही वीएम टर्मिनेट होगी वो टेम्परेरी है, वो स्क्रैच डिस्क है, तो वो टर्मिनेट, वो खत्म हो जाती है। और ब्लॉक स्टोरेज जो है वो एग्जिस्ट करेगी until unless deliberately a user deletes that those blocks, वो जो फाइल्स हैं, फाइल्स के ब्लॉक्स हैं, वो डिलीट करता है। एंड सेम इज फॉर ऑब्जेक्ट स्टोरेज के, इस तरह नहीं होती, परसिस्टेंट है, इट्स डेफिनेटली परसिस्टेंट। अगर कोई यूजर डिलीट करना चाहेगा तो वो फिर तब खुद से डिलीट होगी डेलिब्रेट एक्शन से। और साइज जो है वो डिटरमिन कैसे होता है? इसका साइज डिटरमिन होता है कि जी आपने वीएम का इंस्टेंस कितना बड़ा लिया है और उसके साथ कुछ एडिशनल स्क्रैच स्पेस होती है, ठीक है। आपका एडमिनिस्ट्रेटर ने कितना कन्फिगर किया था, अच्छा जी मुझे 4 GB रैम चाहिए थी और 20 GB का इंस्टेंस की साइज चाहिए था मैक्सिमम, या 15 GB का चाहिए था। तो जैसे आपकी सी ड्राइव में 6 7 8 GB की विंडोज होती है, प्लस 2 3 GB और कर लें, तो इतना आपको साइज चाहिए। सो दिस इज गोइंग टू बी फॉर एफएमएल स्टोरेज। ब्लॉक स्टोरेज जो है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप लेंगे, 1 GB, 10 GB, 1 TB, 5 TB, तो जितने भी आपको डिस्क स्पेस चाहिए इन वॉल्यूम्स वो आप ले लेंगे। और ऑब्जेक्ट स्टोरेज में जितनी भी अवेलेबल आपकी फिजिकल स्टोरेज है वो उसके हिसाब से करेंगे। जनरली इसके अंदर स्केलेबिलिटी
ज्यादा होती जाती है, if you're storing larger objects ये बढ़ती जाती है। इसके अंदर जो जनरली पहले से यूजर स्पेसिफाई भी कर रहा होता है block storage। और टिपिकल यूजेज क्या है जी? एफ का केस में अच्छा जी 10 GB इनिशियल हुआ और मैक्सिमम स्क्रैच दे दिया 20 GB का, मजीद या मजीद आप ऐड कर सकते हैं 30 GB की डिस्क, बट इट्स गोइंग टू बी विद इन फ्यू जीबीज। एंड ब्लॉक स्टोरेज इज गोइंग टू बी 1 TB, 2 TB, 3 TB डिस्क or 500 GB disk, something like that. And object storage is because you store large size of data, archives as well, so it's generally have tens of terabytes of data storage. उसी तरह मैकेनिज्म है, सिमिलर ही है कि आपका जो with the internet you get an access via horizon and you get an access to Swift proxy, so you get an access to this object storage. So through Swift proxy you have an access to different types of storage. So you can have a container based DB, count DB, object DB, and you get an access. Like similar, you get an access to other services. Heat is the next one. Heat is the orchestration engine. Heat के through basically आप orchestrate करते हैं अपने instances को। नोवा तो इंडिविजुअल एक इंस्टेंस को करता है, हीट जो है उसके थ्रू आप पूरा जो अपने इंस्टेंसेस को रन करना है, particularly if you're running some application servers or applications onto that, so you execute them. So through heat you can spin off multiple instances or logical networks and other cloud services. So what you do is for heat you write some sort of कोड टाइप ऑफ टेम्पलेट, ठीक है, कोड टाइप की आप चीज लिख लेते हैं, कोई टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिनको आप लिखते हैं एंड दे एक्चुअली एग्जीक्यूट। तो बेसिकली उनके अंदर आपकी एपीआई कॉल्स उनके थ्रू जाती हैं, बने बनाए आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, टेम्पलेट्स के अंदर आप लिख लेते हैं। सो इट डज ऑटो स्केलिंग, ठीक है, जो सबसे मेन है। जब आपने ऑटो स्केलिंग करनी है तो फॉर ऑटो स्केलिंग यू प्रोवाइड इट विद हीट, और हीट के वो टेम्पलेट्स आप प्रोवाइड कर देते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ टर्म है हीट से रिलेटेड, स्टैक है। स्टैक जो आपकी जितनी भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या रिसोर्सेज हैं, दैट इज द कंप्लीट स्टैक। और स्टैक को डिफाइन किया जाता है इनटू टेम्पलेट्स, और ऑब्वियसली देयर आर गोइंग टू बी सम पैरामीटर्स व्हिच आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड फॉर दीज रिसोर्सेज के किस टाइप के रिसोर्सेज चाहिए, कितनी चाहिए, and resources are the things which are being collectively stacked into a stack, ठीक है, और उनको टेम्पलेट में डिफाइन किया जाता है। और आउटपुट जो है, जो भी इंफॉर्मेशन आपका जो हीट इंजन है वो प्रोवाइड करता है टू द यूजर, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। एंड हॉट इज हीट ऑर्केस्ट्रेशन टेम्पलेट, ये जो टेम्पलेट की हमने बात की थी ऑर्केस्ट्रेशन की उसको। एंड CFN इज AWS क्लाउड फॉर्मेशन, उसके लिए हमारा CFN की API। आर्किटेक्चर अगेन सिमिलर टाइप का ही है, आपने एक्सेस करना है हीट को तो इट्स गोइंग टू बी एक्सेस थ्रू हीट API, or so it's a command line tool through which you can execute it, and then you can also write your templates. So templates के through आप इसको access कर सकते हैं। So heat API component provides an OpenStack native REST API that processes API request, और eventually जो काम सारे करने होते हैं orchestration के, that has been done through heat engine, ठीक है। तो heat engine जो है it has a database जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, तमाम की तमाम जिन चीज़ों का आप रिसोर्सेज का ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं उन सारों की इंफॉर्मेशन मौजूद है। सो इट प्रोवाइड्स दी मेन फंक्शनैलिटी। और हीट एपीआई की एक्सटेंशन है फॉर AWS बेस्ड orchestration, that is heat API CFN. So it provides AWS style query API, और ये AWS के साथ compatible है। So if you are orchestrating your instances on your private cloud and onto public cloud onto AWS, you can do by using this API. वर्कफ्लो इसका किस तरह से है जी कि सबसे पहले इट कलेक्ट्स इन्फो फ्रॉम ओपनस्टैक कंपोनेंट्स, जितने भी आपके ओपनस्टैक के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इट आल्सो क्रिएट मीटर्स एज वेल, उनसे एसोसिएटेड मीटरिंग किस तरह की होनी है। Then these meters can be transformed into other meters as well if they are needed. क्योंकि अगर instances multiple हैं, so they are going to be multiple meters. Then it publish these meters to any destination. जैसे आपका जो eventually metering करना किसका काम है, वो Ceilometer का है, तो it publishes to them, and then it stores जो के meter जो हैं कि जो info उनको data store में करता है, and then it reads data via Ceilometer through REST API, ठीक है, तो वो read के operation होता है।
स्केलिंग किस तरह होती है? ऑटो स्केलिंग जो है ये वही जो आपको बताया कि जी एक टेम्पलेट लिख दिया जाता है, तो इस टेम्पलेट के अंदर बताया जा रहा है कि जी दिस इज टेबलियस टेम्पलेट फॉर्मेट, और फिर उसके पैरामीटर्स हैं, उसमें वॉल्यूम साइज कितना है, फ्लेवर्स क्या है, सो हर एक के अपने टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। पब्लिक क्लाउड्स का भी इसी तरह इसी तरीके से होती है। ऑटो स्केलिंग जब आपने करनी है, यू हैव टू राइट इन दीस टाइप ऑफ स्टेप्स, या आपने जनरली टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, और इनके थ्रू आप उसकी ऑटो स्केलिंग करते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी प्रोवाइडेड टू दी वाया हीट एपीआई टू द हीट इंजन, ठीक है। तो ये ओरिजिनली हीट एपीआई के थ्रू आते हैं, एंड इसको कंज्यूम कौन करता है? हीट इंजन करता है। हीट इंजन जो है वो फिर रिसोर्सेज के साथ इंटरेक्ट करना है, जिन भी रिसोर्सेज को ऑर्केस्ट्रेट करना है, एंड इट स्पिन्स ऑफ दोज रिसोर्सेज, ठीक है। चाहे वो एक नया वॉल्यूम क्रिएट करना था, या अटैच करना था, कोई इंस्टेंस था, कोई पूरा क्लस्टर था, या कोई कीस्टोन के साथ जो है इंटरेक्ट करता था, तो ये काम करता है। सो ऑटो स्कैनिंग के केस में अब आपका जो हीट इंजन है, इट कलेक्ट्स कीप्स ऑन कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। वो जो मीटरिंग है, मीटरिंग एपीआई इसीलिए होती है कि जी ऑटो स्केलिंग जब करनी है, तो मीटरिंग एपीआई तो सिर्फ मीटर कर रही है, उससे कॉन्टिन्यूसली कम्युनिकेशन होती है आपकी हीट की, और हीट जो है वो कम्युनिकेट करके वेन एवर देयर इज अ नीड टू स्केल अप, सो इट्स स्केलिंग आउट दिस स्टैक, ठीक है। तो उसके इंस्टेंसेस को बढ़ाता जाता है। सीलोमीटर जो मीटरिंग के लिए टेलीमेट्री है, टेलीमेट्री से मुराद ये है कि जी मीटरिंग करनी है कैसे? दूर बैठ के भी, ये आपके जितने भी इंस्टेंसेस हैं, जो कंप्यूटर इंस्टेंस हैं या कोई भी स्टोरेज इंस्टेंसेस, सबकी मीटरिंग करते जाना है, कितनी कितनी यूजेज हो रही है। So it provides a framework for metering and monitoring in OpenStack Cloud, and it meters and monitors every type of resources, and it generates alarms to create more resources, ठीक है। तो alarms attach किया जाते हैं साथ। तो क्या काम करता है जी? एक तो मीटरिंग है। सो मीटरिंग क्या है जी? इन मीटरिंग इट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स व्हाट्स हैपनिंग। आप इसको कहें या ना कहें, इट्स गोइंग टू मीटर इट, और यू कैन क्वेरी इट, और अगर आपकी यूजर स्टेटिस्टिक्स भी आप देखते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर, दे आर कमिंग थ्रू द सीलोमीटर। Monitoring जो है, it's associated with the memory, so in which you actually attach an alarm, और वो अलार्म जो है वो ट्रिगर होता है बिकॉज ऑफ मॉनिटरिंग। तो मॉनिटर चेक करता रहता है कि अगर कोई सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट रीच कर जाए, लेट्स से इतने यूजर्स कनेक्ट होने चाहिए थे इस इंस्टेंस के, और अगर इससे ज्यादा होते हैं, सो इट नीड्स टू स्केल अप द थिंग्स, और इट मे नीड टू स्केल डाउन द थिंग्स। तो उसके लिए मॉनिटरिंग यूज होता है। वंस मॉनिटरिंग सीज कि जी ऐसा कुछ हुआ है, इट ट्रिगर्स एन अलार्म। सो अलार्म क्या होता है? इट्स एन मॉनिटर ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स दैट विल बी ट्रिगर्ड व्हेन अ थ्रेशोल्ड कंडीशन इज रीच्ड, ठीक है। सो it does what threshold alarms, or can have combinational alarms which can have multiple or cascaded alarms as well. सो हीट और सीलोमीटर बहुत ज्यादा क्लोज कोलैबोरेशन में काम करते हैं, जैसे भी मैंने बताया आपको। सो हीट इंजन जो है वो अलार्म क्रिएट करता है ऑन टू सीलोमीटर, so through its API service. So alarm evaluator है which is actually monitoring, and whenever there is an let's say if it is doing on a computer instance, तो उसकी continuously जो है ना मॉनिटरिंग हो रही है, ठीक है। जो ही वो उसकी मॉनिटरिंग बताएगी कि जी कोई आपका एक सर्टेन थ्रेशोल्ड जो है वो रीच हुआ है, सो इट विल ट्रिगर दिस अलार्म, और वो अलार्म जो है वो हीट इंजन को चला जाएगा। तो हीट इंजन फिर क्या करेगा? इट्स गोइंग टू इंटरेक्ट with the user metadata, and then going to scale out this stack. वो इस जो स्टैक है इसको बढ़ाना शुरू कर देगा कि इंस्टेंसेस को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज हाउ दे वर्क टुगेदर, ठीक है जी। तो ये उसी की मजीद डिस्क्रिप्शन है। सो दे वर्क टुगेदर, देयर इज अ मीटर स्टोर हियर, सो अलार्म रूल्स आर बीन स्टोर्ड इनटू अलार्म एवेल्युएटर। तो वंस इट सीज कि जी अच्छा जी कोई अलार्म वो हो गया है, तो इट एक्चुअली ट्रिगर्स। मीनवाइल जो है जो भी आपकी क्वेरीज थ्रू हीट इंजन आती है, इट कंसिस्टेंटली प्रोवाइड्स इट, और वो किसी न किसी इंस्टेंस या किसी भी रिसोर्स के ऊपर, लेकिन भी अब यहाँ पे इंस्टेंस तो सिर्फ इंस्टेंस है, इट कैन बी एनी स्टोरेज, इट कैन बी एनी अदर, कोई भी रिसोर्स हो सकता है, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर ओपन स्टैक। That's all for this module. Thanks for watching.